Hey, what's up, guys? Hope you're doing good and you keeping yourself safe. Today is the fourth day of my ride, and today I'm planning to go to Coorg. Right now, for the breakfast, I have come to Mayura Deluxe Hotel, as you can see at my back in here. Hotel is pretty big, and unfortunately, I couldn't take the footage of the food that I had, but I had onion uttappa and set dosa. The quality was supreme. The taste was amazing. There was no match to it, in fact. And right now I have ordered filter coffee. I was seeking filter coffee for almost last 4 days. I asked many hotels and restaurants, but I could not find it anywhere. But right now in Mayura Hotel, it's the filter coffee that I would be having, and this is the one. It tastes divine. There is no other word to it. I mean, the best coffee that I had. It's hot, supreme, best quality or best taste, I can say. So, I'll have a coffee and we'll get another footage. Today I faced 3 to 4 different problems. The problems were getting solved immediately, but the main thing is they were coming. I'll tell you about them later. So let's enjoy the coffee right now, and let's continue our ride. Stay safe. हे व्हाट्स अप पीप्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने राइड थोड़ी आराम से लेट स्टार्ट की है। सबसे पहले तो ये रोड देखिए, मतलब एकदम मक्खन। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, दैट इज़ वीकेंड लॉकडाउन। सो आज सैटरडे है और कुर्ग में आज और कल लॉकडाउन होगा। सो उधर जाने को वैसे तो कोई पॉइंट नहीं बनता, लेकिन अगर मैं कुर्ग नहीं जाऊंगा तो राइड मेरी अधूरी सी रह जाएगी। सो हम जस्ट एक दिन के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वहाँ पे जाने वाले हैं और कल सुबह थोड़ा साइट सीइंग करके चिकमंगलूर वापस। कुर्ग पहुँचने से पहले बीच में सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है जो हम देखेंगे हसन के पास में, जो है शेट्टीहल्ली चर्च। बहुत ही पुराना चर्च है, पोर्तुगीज़ लोगों ने बनाया था। अभी हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही वो रोड है जो शेट्टीहल्ली चर्च की तरफ जाता है। आज सुबह से 4-5 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया। प्रॉब्लम्स आ रही थी और इमीडिएटली सॉल्व भी हो जा रही थी, लेकिन द थिंग इज़ प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आ रही थी। लेकिन जब आप लंबी राइड पे एकदम अकेले निकलते हो तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, और बिना प्रॉब्लम्स के वैसे भी राइड मेमोरेबल नहीं हो पाएगी। सो आई हैव रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड शेट्टीहल्ली चर्च. That place is in Hassan district, or from Hassan village it's almost 15 to 16 odd kilometers. That church which you are seeing at my back, that's the church. The history of this church is that when Portuguese people came to India almost in the year 1860, that time they built that church. That church is kind of Gothic style. When Gorur Dam was built, the Gorur Dam is approximately 10 kilometers from here. When the Gorur Dam was built, this church went underwater. Whenever the water from Gorur Dam used to be released, this church goes under the water, as you can see there. Otherwise, in the months of November, December or Jan or Feb, there is an ability to reach actually till the church. But right now, as you can see, there's a lot of water and it has gone halfway under the water. We were just able to reach at this place only, or till this limit only, and I came off-roading by this kind of location. At this kind of tree there is a main road, but here the Google map showed me to come from here, and that was a good decision. Otherwise the road is pretty long to come at that place, and even that's not possible right now. So yeah, let's have a closer look of it. I have zoomed my camera as far as possible. This is the church.
हम शेट्टीहल्ली से निकल चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं कुर्ग यानी मडकेरी की तरफ। यहाँ ऊपर बोर्ड पे लिखा है मडकेरी 50 किलोमीटर। शायद वीकेंड लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है और रिटर्न मॉनसून की वजह से ज़्यादा धूप भी नहीं है। सो राइड करने के लिए जो एक परफेक्ट वेदर चाहिए होता है वैसा ही अभी बना हुआ है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे। मडकेरी पहुंचने से पहले एक जंगल टाइप का घाट वाला एरिया लगता है, वहीं से जा रहे हैं हम अभी। एज यू कैन सी थोड़ी प्लेजेंट सी बारिश हो रही है। अभी तो मडकेरी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है, लेकिन इस घाट में आपको बहुत सारे होटल्स के बोर्ड्स दिखेंगे। ये होटल्स बढ़िया होने के साथ साथ चीप भी होंगे, क्योंकि मडकेरी से ये ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ओहो, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। मैं ज़रा गाड़ी यहाँ से घुमा लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो शॉट चाहिए जहाँ उस टर्न पे वो फॉग शुरू हो रहा था। यहाँ से घुमा लेता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, यहाँ से फ़ोटो ले ली जाए। अच्छा है, अभी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। लुक एट दिस, सुपर्ब, एक्सीलेंट, वाओ। और अब यहाँ से अंदर मडकेरी सिटी है।